Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम अब्दुल्ला है and I welcome you all once again to my YouTube channel Abdullah 9.0. प्रीवियस वीडियोस में हम बात करते रहे हैं कि बिगिनर्स को कौन सी डूज एंड डोंट्स और कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है अपने नॉलेज को या अपने इंग्लिश के जो यूजेज है उसको एक्सेल करने के लिए डेली रूटीन में, डेली लाइफ रूटीन में इंग्लिश के डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उनको कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है. आई होप उन वीडियो से भी आपको प्रिविलेज मिला होगा. एंड टुडेज वीडियो इज़ अबाउट 5 डिफरेंट सिचुएशंस जो कि नॉर्मली डेली लाइफ रूटीन में जो है हम फेस कर रहे होते हैं. तो वो 5 सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि नॉर्मली आपको डेली रूटीन में आपको जो है वो मिल रही होती हैं. आपने उनको टैकल कैसे करना है, कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि आपके लिए लॉक ओपनर्स साबित हो सकते हैं या जिन फ्रेजेस को यूज़ करके आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन एक्सेल इन योर लैंग्वेज. दैट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहला फ्रेज जो आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फ्रेज इन द इंट्रोडक्शंस. दैट इज़ हेलो, आई एम Abdullah and you are in the next situation. The person in front of you is going to tell her or his name to you. अपना नाम वो आपको बताएंगे. Phrase number 2 is nice to meet you. Like whenever you have exchanged your hellos and highs, तो उसके बाद nice to meet you is going to be the second phrase. Third phrase is where are you from. जब आपको किसी से पूछना है आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो where are you from, आप कहाँ से हैं. The fourth phrase is what do you do. आप क्या करते हैं. इस फ्रेज में आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं जो शख्स आपके सामने खड़ा है उसकी प्रोफेशन के बारे में, उसकी मसरूफियत क्या है. इधर ही और शी इज़ अ स्टूडेंट और इज़ अ बिजनेसमैन और अ जॉब होल्डर और एनीथिंग एल्स. So what do you do? Whenever you have settled enough with a person, the next phrase that follows is what are your hobbies. What do you do in your free time. फारिग वक्त में आप क्या करते हैं. उससे आपके इंटरेस्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को पता चल जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आप दोनों के अंदर इक्वल हैं और उन्हीं को आगे लेके आप चल सकते हैं. The next phrase is what is your phone number. जब आप एक दूसरे के साथ इस हद तक इंटरेक्शन कर चुके हैं that you understand that you have to exchange numbers, so you can use this phrase what is your phone number. And the last phrase of this situation is do you have a Facebook, do you have Instagram, do you have Twitter. तो ये वो फ्रेज होगा जिससे आप सोशल मीडिया अकाउंट अगर लेना चाह रहे हैं तो यू कैन एक्सेस टू द सोशल मीडिया अकाउंट और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन दैट इज इंटरेक्टिंग विद यू. Now let's move on to situation number 2, that is basic English phrases for anywhere. इसमें सबसे पहला जो फ्रेज है that is I think के पूरी दुनिया में यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा फ्रेज है. एक ये फ्रेज है और एक आगे एक सिचुएशन में आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा. That is thanks so much, thank you so much. This is the phrase that you can use in any situation, like somebody is sharing information with you, somebody is serving you, like you are being served in a hotel by a waiter, you are being delivered a parcel, आपको कोई फाइल्स पकड़ाई जा रही हैं, आप मीटिंग में किसी के साथ इंटरेक्शन में हैं. So this is the phrase that is most commonly used in the society. Thank you so much. Number 9 is I really appreciate dash dash dash. I really appreciate your devotion towards the company. I really appreciate the way you cook the food. I really appreciate the support you've been doing all this time. So next phrase is यहाँ पे ethics की थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आपको अगर आप और मैं for example two of us are talking with each other and in the meantime my phone rings. So this is going to be very unethical for any of us कि हम बात को किसी भी कोई अच्छा पॉज दिए बगैर और हम अपना फ़ोन अटेंड करें या हम किसी और से बात करना शुरू कर दें. तो दिस फ्रेज इज़ ऑल्सो मोस्ट कॉमनली बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज़ एक्सक्यूज़ मी.
Okay, you have to say excuse, you have to use this word, you have to use this phrase, excuse me, and the next person understands at the very moment that yes, you are having some kind of trouble, you are having some kind of busyness, you have to attend a call, you have to answer a phone, you have to answer an email, you have to check your WhatsApp or anything else. So once you've said excuse me, you have cashed it out. The next phrase is I am sorry. This was the phrase I was just talking that ये फ्रेज भी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस में से एक है. आई एम सॉरी. यू कैन यूज दिस फ्रेज लाइक wherever you want, wherever it suits you and all. The next phrase is what do you think. आप राय लेते हैं किसी से. What do you think. या कोई एक टॉपिक डिस्कस होता है, आप अपना आइडिया किसी से शेयर करते हैं और आप उससे पूछते हैं दैट व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपको क्या लगता है कि ये होगा, ये चीज़ कामयाब हो जाएगी या नहीं. सो this is the phrase that helps you a lot when you have discussed your thoughts, your ideas, when you have shared your information with someone and you ask what do you think. The next one is how does that sound. Same phrase hai with a different expression we can say. इसको भी आप सेम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जिस सिचुएशन में आप इससे प्रीवियस फ्रेज को यूज करना चाह रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक और हाउ डज दैट साउंड, लाइक दे डू द सेम मीनिंग. एंड इफ एनीबडी इंस्टेड ऑफ यू, आपकी बजाय कोई और आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या अपना कोई आइडिया, अपना कोई ओपिनियन शेयर कर रहा है, अपनी राय शेयर कर रहा है, अपने प्लान्स शेयर कर रहा है और उसको आपने एनकरेज करना है या वो प्लान्स आपको अच्छे लगते हैं, तो उसका आप एक्सप्रेशन कैसे देंगे, उसका इजहार आप कैसे करेंगे. यू वुड से दैट साउंड्स ग्रेट. सो द लास्ट फ्रेज ऑफ दिस सिचुएशन इज ओ नेवर माइंड. कोई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, somebody like pays you a very big, a very massive kind of thanks, तो उसमें आप अपना gratitude show करते हैं by using this phrase that like oh never mind, it's okay, like it was nothing for me or I feel very happy to help you. तो ये expression जो है ये वाला phrase आपको देता है. Now moving towards situation number 3, that is basic phrases for learning English. Okay, so यहाँ पे जो पहला फ्रेज हम यूज करेंगे, आपसे कोई पूछ लेता है दैट व्हाट आर योर हॉबीज नाउअडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम नाउअडेज. सो यू आर गोइंग टू यूज अ फ्रेज लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश. द थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ दैट इज आई एम लर्निंग इंग्लिश. द नेक्स्ट फ्रेज इज आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू हैव टू बी लिटरली वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी क्लियर. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साफ, बड़े शफाफ किस्म के और बड़े ट्रांसपेरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए. यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू से दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड. ओके, इसमें आप कोई मतलब कोई दूसरा ऑप्शन इंग्लिश की नेटिव लैंग्वेज यूजर्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते. द नेक्स्ट फ्रेज इज कुड यू प्लीज रिपीट दैट. अगर ऐसी ही कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप उस इंफॉर्मेशन को पास बाय होते हुए नहीं देख सकते एंड यू रियली हैव टू लर्न दैट थिंग, सो यू वुड यूज द फ्रेज कुड यू प्लीज रिपीट दैट. द नेक्स्ट फ्रेज इज कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर. This is a situation like if a native speaker in front of you is talking in his native accent very fluently, like जैसे आप अपनी लैंग्वेज में उर्दू में या हिंदी में जब भी आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर मास्टर होते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज को या अपने सेंटेंसेस को, अपने फ्रेजेस को अपनी लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं. तो जो दूसरा पर्सन आपके सामने मौजूद है जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो he or she is going to be like resistant or reluctant in understanding everything that you're saying. So in this situation, if same situation happens with you, you have to say it, you have to be transparent again, like could you please talk slower. The next phrase is thank you, that helps a lot. कोई आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके जवाब में भी आपको कहना है थैंक यू, दैट हेल्प्स अ लॉट, कि इस वजह से इसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली. द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट फ्रेज इज व्हाट डज ब्लैंक मीन. अब किसी भी चीज का आपको मतलब पूछना है तो आप उसके लिए लाइक व्हाट डज ब्रिंजल मीन, व्हाट डज कॉलीफ्लावर मीन. ये मतलब फ्रूट और वेज के नाम इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे थे तो मैंने वही ले दिया. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड है जो कि आपको समझना है तो उस वर्ड के लिए आप व्हाट डज दरम्यान में वो वर्ड लगा देंगे एंड देन मीन.
In this sense, you are going to ask the question, you are going to ask for the information that you are not aware of. The next is, how do you spell that? If I pronounce a word for you, फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ कि जी आपका pronunciation ठीक नहीं है, like you have to work on your pronunciation, like could you please write word pronunciation for me, कि क्या आप मेरे लिए pronunciation का लफ्ज़ लिखेंगे? तो आपको नहीं पता कि pronunciation के spelling क्या है, तो आप spell पूछने के लिए, spellings पूछने के लिए आप phrase use करेंगे, how do you spell that? The next phrase is, what do you mean? Obviously, if you're not understanding anything, आपको कोई point clear नहीं है, या आपको आपके सामने खड़े हुए person की कोई बात समझ में नहीं आई है, तो you can very bluntly ask him or her that what do you mean? I just didn't understand that what you meant for that. चलते हैं next situation की तरफ, that is basic English phrases for shopping. This is like for youngsters is must be the most loving thing for them. So shopping के लिए जो next phrases आप अभी सीखने वाले हैं, I hope and I'm sure and I also pray and I also wish for you कि आप ये phrases use करें और आप उसमें उसके बाद अपनी language के अंदर आप difference देखिएगा, अपने confidence के अंदर difference देखिएगा. So if you're in a shop, you're going to shop for something और आपको किसी को बुलाना है, तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? You would use, can you help me? Can you help me? So the responsible person in the store is going to like visit you, is going to come near you, और वो आके आपसे पूछेगा, yes, I can help you. So if you are looking for some specific thing, कोई खास चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, आप garment store में हैं and you are looking for a t-shirt section, so you would say that person like, I am looking for t-shirts, I am looking for pants, I am looking for trousers, I am looking for kitchen accessories, I am looking for hardware accessories. So I am looking for, and after that you put that word that you are certainly looking for. आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं. The next phrase is, do you have this in different colors? यहाँ पे भी आप अपनी जो चीज़, जो आपकी concern चीज़ है, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप लेने के लिए गए हुए हैं, उस चीज़ का आप अंदर जिक्र कर देंगे, like do you have this t-shirt in different colors? Do you have this cup in different colors? Do you have this table in different colors? कोई भी आप जो चीज़ आप किसी का color differentiate करना चाह रहे हैं, तो you can use this phrase. The next one is, I don't know my size. आपसे shopkeeper उर्दू में ही पूछ लेता है, हिंदी में पूछ लेता है आपसे that आपका collar size क्या है, आपकी waist क्या है, कि आपके शू का साइज क्या है, और आपको नहीं उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है, या आप चाह रहे हैं कि वो रीचेक हो जाए, सो यू सिंपली हैव टू से, आई डोंट नो माय साइज, आई डो नॉट नो माय साइज. द नेक्स्ट वन इज, आई नीड दिस इन अ साइज like 11. If you're looking for a shoe and you're having a relatively a big foot just like me, so you're going to find a size for that, a suitable size for that. Either it's a t-shirt, ये कोई shoes हैं, या ये pants हैं, या anything that is related to measurement. So you would say, I need this in a size 11. अगर collar size की बात करते हैं and this collar size is like 15, so you are going to say, I need this in a size 15. There is a phrase again that is being repeated, like I am looking for dash, I am looking for t-shirts, I am looking for car accessories, I am looking for PlayStation DVDs, I am looking for stationery books, I am looking for milk bags. So इस फिक्रे को भी आप कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं and you ask the salesperson, और आप उससे पूछते हैं कि हाँ जी मैं फलां चीज़ ढूंढ रहा हूँ, तो you have to use this phrase. The next one is, how much does this or that cost? किसी चीज़ की कीमत पूछेंगे, so you have to say, how does this cost? How does this t-shirt cost? कोई भी आप उसकी जगह, या आप चीज़ हाथ में पकड़ के कह सकते हैं, like how much this cost? Does this cost? So in the last, when you have finished your shopping,
and you go to the counter, तो normally big cities में बड़े stores में आपको अलहदा से एक carry bag दिया जाता है and उस carry bag का extra charge किया जाता है, but that depends upon your need, that if you need that carry bag or not. So if you need that, you're going to say like I need a carry bag. If you're not going to need that, you're going to say like I don't need a bag. The next phrase is आप अपने शॉपिंग आइटम्स को लेके और आप अपनी गाड़ी तक जाना चाह रहे हैं, बाहर तक जाना चाह रहे हैं, and you are going to ask for help from the salesperson, and you will say, you will use the phrase, can someone help me carry this out? Can someone help me carry this out? कि क्या कोई बाहर ये सामान ले जाने में मेरी मदद कर सकता है? There's a person, so the salesperson is going to give it that person for his service. The next phrase is, can I have this delivered? If there is an item that you want to be delivered at your home, आप घर पे कोई चीज़ deliver करवाना चाह रहे हैं directly, so you ask the salesperson that can I have this delivered? Now here we are going to discuss our last situation, that is basic English phrases for work. आपके work environment पे आप कौन से phrases use कर सकते हैं? The phrase number 1 is, how can I help you? बहुत मरतबा आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, अपने स्टोर्स में देखा होगा, आपने मीटिंग्स में सुना होगा इसको, आपने होटल्स की रिसेप्शंस पे सुना होगा, आपने शॉपिंग मार्ट्स पे सुना होगा, हाउ कैन आई हेल्प यू? दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फ्रेज एट द वर्क प्लेसेस, जहाँ पे दूसरा पर्सन आपसे पूछना चाह रहा होता है that how exactly he or she can help you. The next phrase is, I will be with you in a moment. I will be with you in a moment. आप आप सीनियर हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहना चाह रहे हैं, या आप जूनियर हैं और आप अपने बॉस को कहना चाह रहे हैं, आप किसी भी वर्किंग एरिया पे खड़े हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, and you're a bit busy for some time, so you're going to use this phrase, I will be with you in a moment. मैं आपको कुछ ही देर में ज्वाइन करता हूँ. Next phrase is, what time is our meeting? मीटिंग का टाइम पूछ रहे हैं obviously, and this is very commonly used phrase and easily understandable phrase है. The next one is, please call me at 9 p.m. आप किसी को कॉल करने का कोई टाइम दे रहे हैं, please call me at 10 p.m. please call me in the morning, please call me in the early morning, please call me back at noon, at evening, or anything else. The next phrase is, oh really, actually I thought, fill in the blank. This is a situation जहाँ पे आपको कोई information जो है वो misguide हुआ है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है और आप चाहते हैं कि मतलब आपको अचानक से पता चलता है कि ये उस तरह नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे थे, तो you are going to use the expression, oh really, actually I thought this was not your car. So this is going to be the way आप इस situation को टैकल कर पाएंगे. सेकेंड लास्ट फ्रेज इज, व्हेन इज द डेडलाइन? वर्क एनवायरनमेंट में, स्पेशली टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स में, बैंकिंग में, इस तरह के जो दूसरे सेक्टर्स हैं, मार्केटिंग के सेक्टर्स हैं, तो जहाँ पे भी टारगेट ओरिएंटेशन है वहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है, वहाँ पे फ्रेज यूज़ किया जाता है, दैट व्हाट इज द डेडलाइन, कि ये काम आपको कब तक कंप्लीट करके देना है. एंड द लास्ट फ्रेज ऑफ दिस वीडियो इज, आई एम जस्ट अबाउट टू. इसके बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे, I am just about to call a cab. I am just about to visit the doctor. I am just मतलब मैं अभी ये काम करने वाला हूँ. So this is going to be the phrase. I hope ये 40 phrases आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं. ये 40 के 40 phrases हैं, आपको समझ आ गए होंगे. मैंने इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलेबोरेट किया है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलेबोरेट करने की वजह ये थी कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ किए जा रहे हों, तो उनकी लर्निंग या उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके. इसके साथ ही आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग. प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक यूजिंग द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो hit the like button if you liked the video, and also share this video. I hope to see you very soon in my next video. Thank you so much.